मशीनेबिलिटी की जब बात करते हैं, व्हाट द मशीनेबिलिटी इस पर्टिकुलर there are in spite of efforts by a number of investigators so far there has been no exact quantitative definition of machineability. So this is the because of large number of variables involved and their complexity. तो यहाँ पर number of variables की जो है वो ज़्यादा है. There are large number of variables involved and their complexity. However, the major factors involved in the metal cuttings. कौन कौन से factors होते हैं जो metal cutting में affect करते हैं? There are forces and power absorbed, tool wear and tool life, surface finish, dimensional accuracy and machining cost. So what are the factors? Major factors involved in metal cuttings are forces and power absorbed, depend on the number of power absorbed, tool wear or tool life, surface finish, डायमेंशनल एक्यूरेसी और मशीनिंग कॉस्ट. ये जो फैक्टर होते हैं ये डिपेंड करते हैं अपॉन अ लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स सच एज अ प्रॉपर्टीज बाय वर्क मटेरियल्स, टूल ज्योमेट्री, कटिंग कंडीशन, machine tool, rigidity, etc. Due to this, it is impossible to combine these factors so as to give a suitable definition for machinability. Many authors give the qualitative measure of machinability of the material. पहला पॉइंट ये कहता है कि the ease with which it could be machined, the tool life of tool before tool failure या rehaspering, quality of the machine surface and power consumption per unit volume of material removed. These are the points. First, that is the ease with which it could be machined, the life of the tool before the tool failure or re-sharpening, the quality of a machine surface, and the power consumption per unit volume of the material removed. However, in the production, the tool life is generally considered the most important factor. Tool life जो कि हमने डिस्कस करते हैं, tool life यहाँ पर generally considered the most important factor, and so the most of the investigators have related machinability with tool life. Higher the tool life, the better is the machinability of a work material. Tool life higher the tool life होगी तो better machinability of the work material. और various materials have been machinability ratings जो कि एक दूसरे के रिलेटिव है. Supposing as a material हम लोग ले रहे हैं given a rating of 100, so those materials which have a better machinability will have a higher rating, and those materials with lower machinability have a lower one. So, according to the one investigator, the responsibility may be evaluated as given below. पहला, long tool life at a given cutting speed. Second factor है lower power consumption per unit volume of the metal removed. तीसरा, maximum metal removal per tool re-sharpening. And the fourth is the high quality of surface finish. Fifth is the good and uniform dimensional accuracy of successive parts. Easily disposal chips. According to the one investigator जो machinability है may be evaluated करेंगे as given below, जिसमें पहला पॉइंट ये कह रहा है कि long tool life at a given cutting speed, lower power consumption per unit volume of metal removal और maximum metal removal per tool resharpening, higher quality of surface finish, good or uniform dimensional accuracy of successive parts and easily disposable chips. जो मशीन बिलिटी इंडेक्स है, पर्टिकुलर मशीन बिलिटी का इंडेक्स की बात करते हैं,
तो हमें निकाल सकते हैं कटिंग स्पीड ऑफ द मटेरियल फॉर 20 मिनट टू लाइफ अपॉन cutting speed of free cutting steel for 20 minute to life into 100 and machinability rating या index of different materials is taken relative to the index which is standardized. machinability index जो होता है free cutting steel का वो arbitrary fixed होता है at 100% for other material. तो index को हम लोग कैसे निकालते हैं machinability index परसेंटेज में cutting speed of the material for 20 minutes to life upon cutting speed of free cutting to steel for 20 minutes to life into 100. So machinability index for the some core materials as given below. In the carbon 20 steel is 65, carbon 45 steel is 60 and stainless steel is 25. So we discussed the machinability और इस machinability में हमने यहाँ पे देखा कि पर्टिकुलर कोई एग्जैक्ट डिफिनेशंस नहीं है फॉर मशीनबिलिटी के लिए और यहाँ पर जो लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं और देन कॉम्प्लेक्सिटी जो कि फैक्टर्स अफेक्ट करता है और जो मेजर फैक्टर्स की बात करते हैं तो फोर्सेस हो गया पावर एब्जॉर्ब टूल वियर टूल लाइफ सरफेस फिनिश और डायमेंशनल एक्यूरेसी और मशीनिंग कॉस्ट ये फैक्टर जो होते हैं डिपेंड करते हैं लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ वर्क मटेरियल्स टूल ज्योमेट्री कटिंग कंडीशन मशीन टूल रिजिडिटी और ड्यू टू द इम्पॉसिबल to combine these factors so as to given suitable definition for machinability और many authors for a qualitative measure machinability for materials में जिसमें कि पहला पॉइंट ये था the ease with which it could be machined, the life of tool before tool failure या re-sharpening, the quality of the machine surface and the power consumption per unit volume of material removed. जब कभी भी प्रोडक्शन टू अवेयर इन द प्रोडक्शन टूल जो लाइफ टू लाइफ होता है वो जनरली हम कंसीडर करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर सो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर हैव रिलेटेड मशीनबिलिटी विद टूल लाइफ यानी मशीनबिलिटी रिलेटेड है टूल लाइफ से थ्रू हायर द टूल लाइफ होगा तो बेटर द मशीनबिलिटी ऑफ द वर्क मटेरियल of various materials have been given machinability ratings जो कि विच आर रिलेटिव सपोजिंग हम मटेरियल ले रहे हैं और गिवन रेटिंग ऑफ 100% rating 100 तो मटेरियल जो होगा should be which have a better machinability at a given better machinability will have a higher rating and those materials with lower machinability have a lower one. तो यहाँ पे एलिवेशन का एबिलिटी का फर्स्ट था कि लॉन्ग टूल लाइफ एट अ गिवन कटिंग स्पीड होगा लोअर पावर कंजप्शन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूव्ड मैक्सिमम मटेरियल रिमूवल पर हैंड टूल रीशार्पनिंग हाई क्वालिटी ऑफ सरफेस फिनिश good or uniform dimensional accuracy of successive parts and easily disposal chips. तो machinability index का हम निकालने का था cutting speed of material for 20 minute to life upon cutting speed of free cutting steel for 20 minute to life into 100.